Hello friends, welcome back to a series of lecture. In this series we are continuing with the Indian Constitution. This is the ninth lecture. So in today's lecture we are going to start with the topic secularism and इसी sequence में we would see the interpretation of the article 25 and 26. So the first question comes, what is secularism? So one part, the meaning of one part is, in first part, the secularism means the non-discrimination on the grounds of religion. Non-discrimination on the grounds of religion. Then the state shall allow all the religions in the state. Then the state shall not impose any religion upon the people. Means the state shall not have its religion. The state shall not have religion of its own. State shall treat equally all the religions, and the state shall not discriminate the people on the grounds of religion. So that is one part, and the other part is that there has to be a religious fraternity, that is the religious feeling of oneness. सो इस तरीके से देखा जाए तो सेक्युलरिज्म के दो पार्ट हो गए, एक तो नेगेटिव पार्ट हो गया और एक पॉजिटिव पार्ट हो गया. सो कीप डाउन नोटिंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. सो नेगेटिव पार्ट में जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, मतलब रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट्स हैं, ऑल द रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट्स दे विल फॉल अंडर नेगेटिव पार्ट. That state shall not have any religion of its own. The state shall not discriminate on the ground of religion. So all these are negative parts. So इसमें एक तो हो जाएगा negative part में non-discrimination by the state on the ground of religion. Then no religion of state as such. That is, state will not impose any religion, and the state will be neutral in the matters of religion. Now we have to understand what is meant by the state being neutral on the matter of religion. So इसको हम discuss करेंगे अभी. Then the third one is equality of freedom of religion to all. Means when you talk about the secularism, so those aspects of the secularism which acts as restrictions upon the powers of the state will be called negative aspects of secularism. Now restrictions means what? Means the state shall not do this. So this sentence would impose the restriction upon the state. The state shall not discriminate. The state shall not impose their religion upon citizens. The state shall not be biased upon the matters of religion. That is, the state shall be neutral. Then the state shall not treat people unequally on the matters of religion. अगर उसका पॉजिटिव साइड बोलो तो the state shall grant the equal freedom of religion to all individuals. So when you say that the state shall be neutral in the matter of religion, it does not mean that the state will be blindfolded. Blindfolded मतलब कुछ भी नहीं देखेगी, बस धर्म के मामले में कुछ बोलना ही नहीं है. Then it would be difficult. So the state has to play the proactive role. किसी एक religious community को अगर खास करके वो minority community है और उसके मन में कुछ fear है, the minority community has some fear in its mind of being suppressed, of being sidelined in the matters of religion. Can the state, in order to bring the minority religious community into the mainstream, take some proactive steps for the minority community? Why not? Why not? For example, मानसरोवर यात्रा के लिए हम जाते हैं तो सब्सिडी नहीं मिलता, बट हज के लिए जाते हैं देयर इज सब्सिडी. व्हेन द हिंदूज आर गोइंग फॉर मानसरोवर यात्रा, द सब्सिडी इज नॉट गिवन. सब्सिडी नहीं देते मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट मेंटेन कर ही रही है,
दैट इज़ a huge infrastructure. उसके लिए फ़ी देना पड़ता है आपको, बट हज के लिए you get the subsidy. So it is depend on upon the government. Sometimes haj subsidy also suspended also in crucial time कर सकती है state, like in recession times. But otherwise you can always think of that ये तो गलत कर रही है state, एक रिलीजन को प्रमोट कर रही है और दूसरे रिलीजन को नहीं. But that is a matter of choice of the state. That is the matter of policy of the state. So if the government wants, they can also give subsidy for the Mansarovar Yatra also. So that is the matter of policy. और ये जो policy इन्होंने follow किया government ने, that is time the Muslims are in minority. तो ये कारण रहा होगा. So जब भी आप constitution पढ़ते हो तो we should not look anything negatively. क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो कभी भी किसी भी चीज को नेगेटिव सेंस में मत देखिएगा और पॉलिटिकल थॉट से बाहर निकलकर कॉन्स्टिट्यूशन को देखिएगा. मे बी द गवर्नमेंट बिलीव दैट द मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी इन इंडिया और एनी अदर सेक्युलर कम्युनिटी दैट इज इन माइनॉरिटी इन इंडिया and they needed extra assurance so as to make them believe that they are also equally protected in the state, and therefore because they are the second majority population in India, तो मे बी स्टेट की पॉलिसी ये रही होगी कि अगर हमको उनको हज यात्रा के लिए सब्सिडी देते हैं so maybe that give them the feeling of satisfaction by giving additional care of them. But that is the policy of state only. अब जैसे सिखों के लिए है एक पिलग्रिमेज, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, सो उधर जाने के लिए सब्सिडी नहीं मिलती. द नेम इज हेमकुंड शाह. हेमकुंड शाह जाने के लिए भी कोई सब्सिडी नहीं मिलती. सो दैट इज अ मैटर ऑफ चॉइस ऑफ गवर्नमेंट. सो इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस. तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि हज का सब्सिडी हटा दे और हेमकुंड शाह का सब्सिडी देना चालू कर दे. दैट इज मैटर ऑफ चॉइस. सो किसको वो सेटिस्फैक्शन देना चाह रहा है, इट इज डिपेंड ऑन स्टेट. वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते द स्टेट सेल डू इक्वली. जिसको ज़रूरत ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं, जैसे हज पर जाने के खर्चे ज़्यादा हैं, तो अकॉर्डिंगली द स्टेट गिव सब्सिडी. सो इट डिपेंड्स व्हाट स्टेट टेक्स इन ऑब्जर्वेशन. सो जब हम बात करते हैं ना स्टेट विल बी न्यूट्रल, इट डज नॉट मीन्स दैट स्टेट रिमेन्स इनएक्टिव. सो सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल in an area where a particular religion in minority and communal rights arose in that area, then for the minority religion, if the state thinks fit that there is threat on the minority religion, then the state would give that religion a extra protection by doing a proactive role. So the state always have to be neutral plus proactive. As and when a particular religion requires, it may go for giving them the extra protection or the extra benefits. And that is not a negative act on the part of the state, because the point is that the India is a multi-religious state. So the state has to understand the realities of the society. So any government or any political party for that matter, the government must be remain neutral plus proactive. But if we talk about any dal or political party, they are not representing the whole community. If we talk about different dals or senas in India, they are not representing. There are persons, several persons who follow them or who are the member of those dals or sena, but these parties or these dals or sena are not representing the whole community, because it should not be imposed on others. It is their person's neutral choice. So there are different groups in different religion, but you cannot say that the whole religion is of same kind of thinking.
There are various groups in Muslims also, in Hindus also, Sikhs also. You cannot impose that for all the all religion people. For example, do all the Hindu religion people follow the Shiv Sena or Bajrang Dal? Answer is no. Do all the Hindus follow the RSS? The answer is no. Do all the Muslims follow the particular groups like AIMK, all that? Uh, the answer is no. Do there are groups in Sikhs also? Do all the Sikhs follow them, those groups? The answer is no. बिकॉज ये टाइम राज शासन का नहीं है, जो अकबर का टाइम थोड़ी है. इट इज़ ए इंडिपेंडेंट इंडिया. या फिर किसी मुगल शासक का नहीं है, औरंगजेब वगैरह जो जबरदस्ती की जाए. या फिर कोई हिंदू शासक भी रहे होंगे जहां पर धर्म इम्पोज वॉट एवर. तो किंग्स रूल नहीं है जो religions are imposed. So what I mean to say is that India is a multi-religious country, and the prime concern of the Indian government is will always be to bring about a harmony and a peaceful coexistence between the various religious communities. इसलिए कोई भी धर्म, कोई भी पार्टी या कोई भी समुदाय अगर ये चाहेगा दैट इंडिया एक पर्टिकुलर समुदाय का हो जाए, देन दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इंडियन सोशल वैल्यूज और इंडियन एथोस में ये पॉसिबल ही नहीं है दैट इंडिया विल बिकम अ सिंगल रिलीजियस कंट्री. फॉर दैट पूरे इंडियन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा पहले. And in India, it is not possible to become a uni-religious, be it of any community, be it Hindus, be it Sikhs, be it Christians, anyone. No one can ever think of keep making in India belong to only one particular community. Say for example, जो सिख राइट्स हुए थे 1984 में, या फिर गोधरा कांड, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे. सो कोई भी राइट्स हों उनके बारे में सोच के, या फिर दिल्ली में हुए थे जो, सो द मेजॉरिटी ऑफ पीपल गेट हॉरिफाइड बाय थिंकिंग अबाउट दोज राइट्स एंड नो वन अप्रूव्स दैट. सो एनी रीजनेबल रैशनल person thinking of India, any rational reasonable person thinking of India, Indian citizen जिसकी थिंकिंग रैशनल हो, would look upon these rights as a bad patch of the Indian history. So कोई भी उसको सोचकर खुश तो नहीं होगा, except of those person which are of not good mentality. कुछ लोग, उनको छोड़कर everyone is against these rights. So we are talking about the majority of India. So if that is the case, majority of people are thinking about like the bad patches of this such kind of rights. Then if that is the case, then the India social ethos is essentially secular. Because for example say, अगर एक रिलीजन का भी हो जाए इंडिया, वन रिलीजन भी हो जाए, यूनि रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल सपोज, it is not possible as but suppose. So हिंदूज में भी काफ़ी ग्रुप्स हैं. अगर हिंदू पूरा इंडियन हिंदूज में हो जाए, और इट इज़ इम्पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल, और बट मान लो हो भी जाए, देन ऑल्सो डिफरेंट ग्रुप्स, शिवसेना एंड बजरंग दल, RSS, एंड हिंदूज में भी अलग अलग विचारधारा वाले अलग मठ भी हैं काफ़ी सारे. तो ये भी आपस में फिर जिनकी फितरत ही लड़ने की हो जाएगी तो वो आपस में लड़ेंगे. फिर सिमिलरली अगर मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाए पूरा इंडिया, या फिर किसी अदर रिलीजन में, तो मुस्लिम्स में भी डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो उसमें भी वो भी आपस में लड़ेंगे. सिमिलरली फॉर सिख, क्रिश्चियन, ऑल दिस. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी कैन से दैट जो
breath of the Indian society is secular, from which the Indian society remains live, जिससे जीवन रहता है इंडियन सोसाइटी में, दैट इज सेक्युलर। सेक्युलर सेक्युलरिज्म रूपी सांस को ग्रहण कर कर इंडियन सोसाइटी जीवन जीवित रहती है। सो इंडियन सोसाइटी कैन नॉट बी कम्युनल। देयर मे बी एवरेशंस बट यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू a communal kind of thing. So one aspect, other aspect of secularism is to do a proactive role. We already started to discuss it. So that is positive aspect. Since the India is a multi-religious society, and the moment you have constitutionally accepted that it is a multi-religious society, the moment you have constitutionally accepted that it is a multi-religious society, so that means that you are thinking of a peaceful coexistence of all the religious communities. And the moment you start thinking of the peaceful coexistence of all the religious communities, then the state's role does not get limited to only the meaning be neutral in the religious matters of the society. In fact, neutrality, तो जो न्यूट्रल रोल है गवर्नमेंट का वो अपनी जगह है। अगर मल्टी रिलीजियस सोसाइटी हो तो स्टेट का पॉजिटिव रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। द स्टेट हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी प्रोएक्टिव। एक धर्म कहीं पर पीछे हो रहा है या दब रहा है, उसको आपको ऊपर लाना या सपोर्ट करना, दैट इज द वर्क ऑफ स्टेट। कहीं और पर कोई और धर्म दब रहा है मतलब सप्रेसिंग बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के चक्कर में, बिकॉज ऑफ कम्युनल राइट्स, ऑल दैट, वॉट एवर द रीजन, देन देयर द वर्क ऑफ स्टेट स्टार्ट्स टू ब्रिंग दैट रिलीजन up by doing a proactive role. Government should do a proactive role, and government must always be neutral. Government do not belongs to any political party. पार्टी अलग चीज है, उसको आपको वहीं छोड़कर आना पड़ेगा when you entered into the government. When any persons enter to the post of chief minister or prime minister or any minister, cabinet minister or MP MLA, then you are upholding the constitutional post. संवैधानिक पद पर आने के बाद then you are uplifted from that position. So the nation is higher than of the political party for them. So when a person in a political party, whatever he says, but when he upheld the position, then he must have to take proactive roles. And what proactive role? If any community or religion is suppressed, then give them support. You should have given them all possible support. This can happen in any community anywhere. This can happen in Hindus wherever they are in minority. This can happen with Sikhs, or this can happen to Christians wherever in minority, or Muslims, anyone. So whenever such a situation arose, the what support the government should give? The government should take a proactive role, because you are the government and you are symbolic of the people. And once you are the government, you are also symbolic of the Constitution of India. You are representing the Constitution of India, and you are the trustee of the Constitution of India, trustee of the faith of the people. क्योंकि आप ही सरकार चलाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना आपकी जिम्मेदारी है. So when a person come as up of a constitutional post, upholds the constitutional post, you cannot simply think as that those group of persons are their vote bank or not. You have to take care of all of them. So whenever there is communal rights, after the communal rights, if there is a loss to any community, the government must do a proactive role in making them rehabilitation properly, and that to be done properly.
by giving them money compensation and other kind of benefits for settling them for foods and all shelter, all those, and that should be given urgently, because when they are suffering from such kind of situations, the children of that community are watching those incidents कि हमारे घर वालों को इन्होंने मारा, and we do not get any support from anyone, and will not they develop some kind of negative thoughts about the lawfully established government, and the consequence of is that in longer run this is what creates the problem. Maybe some external forces जो इंडिया को destroy करना चाहती हैं, that they will take the benefits of such kind of persons, people who are having negative thinking in their minds about the government, Indian government. Maybe they use them for the terrorism, and ultimately this would create a communal disharmony in the country, because जिन बच्चों ने उस समय वो देखे होंगे दृश्य, वो तो छोटे छोटे देख रहे हो और उसी नेगेटिव फ्रेम माइंड के साथ वो बड़े होंगे 10 साल 20 साल बाद. So it is the duty of the state to come with the full support to that community and also prosecute the wrongdoers as swiftly as they can. Then that feeling of negativity will not be there. So this is the role the state should play, not only when the rights are broken up, otherwise also according to the situation and the condition, the state shall play the role of binding them together. Because when we are saying that India is a multi-religious society, so we have constitutionally accepted that we are a multi-religious society. और एक बार जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्ट कर लिया कि हम मल्टी रिलीजियस सोसाइटी हैं, तो उन रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच हार्मनी इस्टेब्लिश करना स्टेट का काम है और इंडिविजुअल्स का भी काम है, हमारा भी काम है. सो अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन. अब स्टेट पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, सो स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर, because we individually can educate lesser persons, lesser people. And और जहाँ तक हमारा सवाल है, we can only educate if the person is सामने वाला person is having that feeling. But state is having that much of resources by doing a proactive role, by creating feeling in them, by doing act for them. वो feeling create कर सकता है, then educate them. फॉर एग्जाम्पल से कोई राइट्स में किसी बच्चे के माता पिता चले गए, घर बार सब चला गया, या फिर कुछ इस तरीके की सिचुएशंस हो गई, सो प्रोवाइड दोज चिल्ड्रंस ए बेटर काइंड ऑफ एजुकेशन, अदर सेफ्टी हाउसेज एंड हॉस्टल टाइप फैसिलिटीज वेयर दे चेंज देयर माइंड फ्रेमवर्क. जो माइंड सेट उनका हुआ है, दे चेंज उस काइंड का environment the government has to provide them. It should be taught to them that the rights are held because of some mischievous persons, not of all community person. Everyone is not responsible. एक कम्युनिटी के सारे व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी भी राइट के लिए. तो इस तरीके की फीलिंग्स उनके अंदर इंसर्ट नहीं की जाएगी. देन इट इज said that the state is doing proactive role. That is one example only. So the point is, suppose I am a Parsi. I have chosen to be in India. On what faith? Number one, we are having material here in India. My house is here, my relatives are here, my business is here. So I do not have any option to go elsewhere. That is fine. So you can say that therefore I have chose to be in India. But otherwise, if you, in the larger sense, if you see, will I not repose my faith in the Indian Constitution? Will I not repose my faith in rest of the India, that I am a Parsi, I am a minority community in least of smallest community,
Still, I have full faith in the people of India, and they will keep us as brothers and sisters, because we always have been brothers and sisters. No matters Parsis have joined India or come in India very late and very last, लेकिन जब भी आए, एक बार आकर अगर बस गए, they are the part of Indian society. So the social values that cannot be kept out, that cannot be removed. So they cannot be kicked out, they cannot be removed, anyone, any religion. For example, say काफी लोगों का arguments होता है that Muslims came from outside. अगर उस तरीके से देखें तो हिंदूज भी बाहर से आए, बिकॉज ओरिजिनल ट्राइब पॉपुलेशन तो जरावा ट्राइब है, दैट इज इन अंडमान निकोबार. ओरिजिनल पॉपुलेशन तो जरावाज और नेग्रिटोज हैं. अगर रेसेस की बात करें तो ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नेग्रिटोज. वी केम फ्रॉम मेडिटेरियन साइड एंड सम कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन साइड. उस तरीके से देखें तो हम सब भी माइग्रेंट्स हो गए. सो कोई ना कहीं से आया है. Original population of India are the Negritos. So that is no logic. उस तरीके से देखें, हिंदूज में सिखिज्म बाद में आया, जैनिज्म बुद्धिज्म बाद में आया, आर्य समाज और बाद में आया. सो क्या इन सब को आप ये कह सकते हो कि ये इंडियंस नहीं हैं, ये बाहर के हैं? तो रहेगा कौन इंडिया में? सो ऑल दीज आर्गुमेंट्स, दीज आर एंटी सेक्युलर logics and arguments. So the fact of matter is that once we have decided that this is the country and we will stay here and we are part of it, and that we are doing in past also. So once we have decided that these are the religious communities were there in India, and they were all living in India because we are secular country. So now the now comes the point कि इनके आपस में religious reasons के वजह से जो एक divide create होता है, because you see oneness to the God, and God is a very important uniting factor. Muslims के लिए Allah is the very important uniting factor. For Hindus, the God that in which you believe, he or she is a very important uniting factor, and for the other religions accordingly. तो अब आप उस यूनाइटिंग फैक्टर की वजह से आप एक कम्युनिटी बन जाते हो, कोई हिंदू कम्युनिटी, कोई सिख कम्युनिटी, एंड सो फोर्थ. एंड दीज कम्युनिटीज हैविंग a thin line between themselves. The more close they are within themselves, the more distance they will be with each other. तो जितना इन कम्युनिटीज के अंदर खिंचाव होगा, उतना ही इन कम्युनिटीज के एक दूसरे डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, उतना ही एक तरीके का रिपल्सन क्रिएट होगा आपस में. एंड दैट इज ए नेचुरल फिनोमेना. दे विल नॉट फील वन विद ईच अदर, particularly in the matters of religion. So the state has the role to fulfill this gap between the different religious communities. The state also have to bring attraction between these religious communities. Somehow they should be get together, and that role is the proactive role that state has to play. एंड वहीं पर आपका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज टॉकिंग अबाउट द फैटर्निटी. वहीं पर जो फैटर्निटी इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन काम करेगा. फैटर्निटी ऑफ रिलीजन amongst the religion does not mean that I stops following my religion. I will always follow my religion because I am having faith in my religion. But I will look at the persons following the other religion with respect, and we should not disrespect them merely because they are following some other religion. We should not trying to suppress them merely because they are following some other religion. Rather, I will look at, respect them, and I will respect their God also. I am not saying that you worship or I worship their God, because that is their religion and this is my religion. But I always be somewhere
positive towards their God also and towards them also, and I will feel and believe that they are the part of the same society as I am, as you are. If that is the case, then that is called religious fraternity. Now you see, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, वेस्टर्न वर्ल्ड में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। वेस्टर्न वर्ल्ड में डार्क एजेस के टाइम में, डार्क एजेस यू मीन जब धर्म का पूरा कंट्रोल था, व्हेन द रिलीजन हैव द फुल कंट्रोल अपॉन डे टू डे लाइफ। सो इन द डार्क एजेस द गवर्नेंस एंड रिलीजन, ये दोनों अलग अलग नहीं थे। इट वॉज रिलीजन विच वॉज गवर्निंग, it was church which was governing. Even if there was a king, the king is having the total control of the church, and he will be obeying the church because the church will be considered to be the divine voice of the God, and it is the God which governing through the church. So in that way, it is complete mix up between the governance and religion. And mind you, there was Christianity at that time, 12th, 14th century, उसके आसपास there was Christianity. बाद में intermixing of religion हुआ है. So earlier it was a uniform religion in the Western world. You talk about Europe, you talk about America, it was a uniform religion, Christianity. थोड़ा बहुत वहाँ पर इस्लाम का मूवमेंट हुआ था, mainly it was church. अब इनके लिए ये समस्या थी कि बिकॉज ऑफ द डार्क एजेस द इंडिविजुअल लाइफ, द डे टू डे इंडिविजुअल लाइफ गेट्स अफेक्टेड। उसको जो भी कुछ करना है धर्म के लिए करना है, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस रह ही नहीं गया। सो दे वेंट फॉर द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, यू से, इन विच दे हैव लिबरेट द गवर्नेंस फ्रॉम द रिलीजन। सो जो आइडिया था वो धर्म और गवर्नेंस को अलग अलग करने का आइडिया था। एंड द डे व्हेन वी एबल टू ब्रिंग अबाउट दैट रिफॉर्म, एंड द डे वी विल एबल टू रिमूव द कंट्रोल ऑफ द चर्च फ्रॉम द डे टू डे लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, द रिलीजन बिकेम एज मैटर ऑफ चॉइस। आई एम इंडिविजुअल, आई एम हैविंग मैटर ऑफ चॉइस कि मैं किस धर्म का पालन करूं, तो वहां पर तो क्रिश्चियनिटी थी। बट डे टू डे लाइफ में व्हेन दे वर फ्री टू वॉट एवर दे वॉन्ट विद इन द डोमेन ऑफ लॉ, जैसे ही ये अटेन हो गया, देन वी वुड से दैट दे हैव अटेन्ड द सेक्युलरिज्म, क्योंकि उसके बियॉन्ड उधर कुछ नहीं करना था। जैसी धर्म का आपके डे टू डे लाइफ पर नियंत्रण हट गया, तो वहां पर माना गया कि दैट वी हैव अटेन्ड सेक्युलरिज्म in the Western world because they were uni-religious. But in India what happens is there was no such faith of dark ages कि धर्म का टोटल नियंत्रण upon individuals. That kind of suffering India never faced. So in India, religion and state will always separate. तो हमेशा से सेपरेट रहा इंडिया में रिलीजन और स्टेट। एक राजा है, वो धार्मिक काम भी करेगा और गवर्नेंस का कार्य भी करेगा। सो रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ, यू फॉलो वॉट एवर रिलीजन यू वॉन्ट, बट इट वुड नॉट इन्फ्लुएंस द डे टू डे लाइफ। अब कुछ इंसिडेंट हुए हों, दैट इज डिफरेंट थिंग। देयर आर 1 or 2 पैचेस इन विच द रिलीजन एंड governance are mixed up, but we are talking about the major part. For example, say that we are indulged in our day-to-day life activities and we are also doing our religious activities. अगर हिंदू हैं हम तो मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मुस्लिम हैं तो नमाज पढ़ते हैं, all these things according to their religion we are doing that also according to our faith and circumstances as we are having time, and do our, अगर किसी को faith नहीं है, he is atheist also, and do our day to day life work also. So we are not mixing up our day to day life with the religion. These are two different things and aspects. And this kind of lifestyle has been in India throughout. So India में dark ages जैसा concept कोई नहीं आया था.
एंड देयरफॉर इंडिया में सेक्युलरिज्म का ये आइडिया नहीं था कि धर्म और राज्य को अलग करो, गवर्नेंस और धर्म को अलग करो, बिकॉज दे वर ऑलवेज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इंडिया में धर्म और राज्य को अलग करना वॉज नॉट द एजेंडा एवर। इंडिया में धर्म और राज्य शुरू से ही अलग थे। फिर भी इतना जरूर था, स्टेट्स आर न्यूट्रल इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। स्टेट shall remain neutral in the matters of religion. State shall not impose religion upon anyone, etc., etc. But more importantly, in India, since we were a multi-religious society, and particularly after the constitution was framed, we realized that we are a multi-religious society. So here, mere neutrality in the matters of religion, as in the Western world, is not sufficient. That will not be sufficient for secularism. Because इंडिया में we are multi-religious, तो इंडिया में we are multi-religious, तो जो टास्क है इंडिया का वो तो यहाँ से स्टार्ट होगा। जबकि वेस्ट में वो यूनी रिलीजियस थे, तो राज्य को और धर्म को सिर्फ अलग करना था। बट इन इंडिया राज्य और धर्म दोनों शुरू से ही अलग हैं। इंडिया में राज्य और धर्म शुरू से ही अलग हैं, तो इंडिया का टास्क इधर से स्टार्ट होता है, क्योंकि वी आर मल्टी रिलीजियस, देयरफॉर आवर टास्क स्टार्ट्स फ्रॉम हियर वेयर देयर टास्क एंड्स। And it is not only about the state remains neutral. It is only one aspect, no doubts. It is also about making all the communities believe as of the assurance that we all are safe and we all are equals in the country. And therefore the state shall provide the equal freedom to all, freedom of religion to all, and more importantly for the peaceful coexistence, the requirement of mutual respect, mutual tolerance। म्यूचुअल टॉलरेंस मतलब कि सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे के धर्म को टॉलरेट करें। वैसे टॉलरेंट थोड़ा सा नेगेटिव शब्द है, उससे भी ऊपर म्यूचुअल रेस्पेक्ट। टॉलरेंस मतलब कि तुम भी रहो, हाँ मैं भी रहूँगा, दैट डज नॉट शो ए गुड सेंस। लेकिन जब हम म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे चले जाते हैं, देन इट चेंज द टोन्स कि हाँ आप भी रहिए, मैं भी रहूँगा। सो दैट इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। दिस इज द मेन डायमेंशन ऑफ द सेक्युलरिज्म इन इंडिया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द difference between freedom of religion and secularism. Secularism is a more broad concept and it includes freedom of religion. Secularism is more about mutual respect between the various religious communities, and freedom of religion, on the other hand, it's simply one's own freedom to profess, propagate, etc. the religion practices, profess, practice and propagate religion. अब इन दोनों में ज़्यादा वनरेबल कौन है? इन दोनों में ज़्यादा संवेदनशील कौन है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है इंडिया के अंदर? सेक्युलरिज्म। अब देखो, आई हैव माई ओन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आई हैव माई फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट मीन्स वॉट? इट मीन्स आई कैन बिलीव इन गॉड, I can believe in Ma Durga, I can believe in Allah, I can believe in Shivji, whatever God. I can believe in Krishna, I can believe in Rama, I can believe in Guru Nanak Ji, I can believe in Christ. That is my belief. Or I may also believe that there is no God, because I may also atheist also. So I may believe or I may not believe. It is a matter of my personal choice. And also, I have the right to practice and profess my religious rituals. If I am a Hindu, I can do the Aarti, Havan, etc. If I am Muslim, I can perform the namaz, and so forth. So, वो मेरा अपना रिचुअल है
उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, मैं अपने मन में अपनी आस्था रखूंगा और एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होगा उसका मेरे धार्मिक क्रियाकल्प में। इन माई एक्सटर्नल बिहेवियर it will show as to I belong to this particular community. It is a matter of my personal faith within me, within you, and manifest externally only when I perform the rituals. But when you talk about the secularism, I am secular or not, that will depend upon how I look at others. मैं दूसरों को कैसे देखता हूँ और कैसे देखता हूँ मतलब कैसे बिहेव करता हूँ। सेक्युलरिज्म इज समथिंग विच इज एक्सटर्नली मैनिफेस्ट सोन एक्सटर्नली in your outdoor behavior towards the others. If I am a Hindu, I have the freedom of religion. I follow the rituals. It is my belief कि मैं किस भगवान में पूजा करता हूँ या विश्वास रखता हूँ एंड सो फोर्थ। लेकिन मेरा सेक्युलरिज्म मेरे अंदर नहीं रहेगा। सेक्युलरिज्म इज नॉट ए इंटरनल मैटर दैट एग्जिस्ट विद इन यू। सेक्युलरिज्म इज द फीलिंग दैट मैनिफेस्ट इन योर external behavior. If I am secular, I also respect the people of other religions. If I am secular, I respect the people of other religions. And if I am anti-secular, then I always disrespect the people of other religions. And that may result into disharmony between me and others. That may make disruptions between the observations of me and others, means those who belong to the other religions, and that may create a problem to the society. तो इन दोनों में से किसको ग्रूम और हार्नेस करना ज़्यादा जरूरी है? सेक्युलरिज्म को, क्योंकि सेक्युलरिज्म अगर डिसरप्ट होता है तो सिर्फ आपके अंदर कुछ नहीं हो रहा, दैट विल मैनिफेस्ट इन योर एक्सटर्नल बिहेवियर ऑल्सो, and that will ultimately disturb the society. And therefore the peaceful coexistence of the society, a mere guarantee of freedom of religion is not sufficient. There has to be a guarantee of secularism, and secularism is not something which may be guaranteed, because secularism is feeling of mine which is manifest in my external behavior. So secularism can be promoted by educating. You may educate the people in like that, you may train people like that, you may give extra assurance to the peoples of different religious communities. So in that way you assure them and their outward behavior will be good. It will good to the others. और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डिस्कस्ड इन SR बोमई केस, SR बोमई S.R.BOMMAI वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 case. So what I have discussed till now is the four dimensions of secularism, out of which three are negative dimensions and the fourth one is positive dimension. And we have also discussed that logic, why we have the fourth dimension, because we have constitutionally admitted to be multi-religious society, and therefore in the multi-religious society mere neutrality in the matters of religion and guarantee of freedom of religion will not be sufficient. Rather, the state has to bring about a positive sense of thinking of people, respect for the people of other religion, so that they other peoples feel comfortable. इसी में एक केस था अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, that was 2002 Supreme Court. Now in this case the issue was NCERT books में धर्म से रिलेटेड वेरियस चैप्टर्स जोड़े गए थे
And at that time there was NDA government, and there was allegations that there is Bhagwakaran going on. Bhagwakaran means saffronization, मतलब हिंदू धर्म को हम बच्चों को सिखा रहे हैं from the childhood, so that Hinduism is promoted. So for that issue, the court held that you see that there is a difference between religious instruction and religious education. There is a distinction between religious instruction and religious education. Religious instruction का मतलब है, जब आप आर्टिकल 28 पढ़ोगे तब आएगा ये पॉइंट। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि किसी एक धर्म के रिचुअल्स को आप कैसे परफॉर्म करोगे। हाउ विल यू परफॉर्म द रिचुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, दैट हैज टू बी सीन। When you are talking about the religious instructions, then you are teaching the children the rituals of various religions. वो आप नहीं कर सकते। किसी एक बच्चे को किसी एक धर्म के रिचुअल्स कैसे सिखा सकते हो? अगर वो किसी एक धर्म का है तो दूसरे धर्म का रिचुअल्स आप उसको कैसे सिखा सकते हो? दैट इज प्रोहिबिटेड। लेकिन धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। द कोर्ट हेल्ड दैट द चैप्टर्स हैव इंक्लूडेड that is not only about the Hindu religion or Hindu saints. The chapter includes the teachings and preachings of the saints of various religious communities. That is Hindus also, Sikhs also, Muslims also, Christian, everyone. So when you are including the chapters of all religious communities, then how can you say that you are only promoting Hinduism? Because we are not giving them religious instructions मतलब कैसे rituals perform करते हैं। We are giving them religious education by teaching the values that the various religious saints have been telling people, जो धर्म गुरुओं ने कहा था, that we are teaching। और जब यंगर एज के बच्चों को at the younger age, if the children came to know that कि सभी धर्म के जो भगवान हैं या सभी धर्म के धर्म गुरु हैं, सबका अल्टीमेट पॉइंट तो एक ही है, मानवता, ईश्वर की सेवा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट विल टीच देम दैट वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और सबका अल्टीमेट गोल एक ही है। सो दैट मे ब्रिंग अबाउट a greater secular set of values in the children. And if that is the case, कोर्ट ने बोला, if that is the case, and which actually is, then these chapters are more to promote the religious fraternity. So these are promoting religious fraternity, so it is a welcome step. क्योंकि अगर बचपन से आप बच्चों को अगर सिखाना शुरू करो कि धर्म में ये अंतर है लेकिन मौलिक अंतर कुछ नहीं है, सभी धर्म एक ही चीज की बात करते हैं। If that is taught to them, then it will create a kind of mutual respect, understanding among them, and results into fraternity. And hence the court held in this case कि NCERT बुक्स में जो भी चैप्टर एड्स किए गए हैं, they are not violative of the constitution. सो एनसीईआरटी में चैप्टर्स ऐड करना वो भी एक सेकुलर स्टेट है, एंड स्टेट कैन टेक सो मैनी मेजर्स बाय विच इट प्रमोट रिलीजियस फ्रेटर्निटी। सो हमने वेस्टर्न सेकुलरिज्म देखा, देन इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में भी डिस्कस कर लिया, एंड वी हैव सीन वेरियस डायमेंशंस ऑफ इट। देन देयर आर रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। यू मे रीड Article 15 clause 1, you may read 16 clause 2 and 29 clause 2. You will find that all these articles they are writing that the state shall not discriminate on the grounds of religion. Then the second, third aspect we have seen. Then we had seen that mere the state neutrality, non-discrimination in the matter of religion will not have been sufficient to promote the fraternity on the religious matters. Thus, it is constitutionally stipulated the state shall play a proactive role
in the religious matters to promote the feeling of religious tolerance or to curb the feeling of religious apathy. Religious apathy originates from fear. Fear of what? Fear of suppression. If I belong to a minority community and I have the fear of being suppressed, minority community का मतलब ये नहीं कि नेशनल माइनॉरिटी, किसी एरिया में, लोकल एरिया में अगर मैं माइनॉरिटी हूँ तो आई विल हैव द फियर ऑफ बीइंग सप्रेस्ड. आई हैव द फीलिंग ऑफ बीइंग fear of suppressed if the activities are such, and therefore I start feeling badly towards other religions. अगर मेरे दिमाग से वो सप्रेशन का फीलिंग हटा देते हो बाई वॉट एवर द पॉजिटिव रोल स्टेट विल डू, देन आई विल नॉट हैव द रिलीजियस एपैथी. सो जितने भी कम्युनल राइट्स वगैरह के सिचुएशंस है, ऑल बिकॉज ऑफ रिलीजियस एपैथी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फियर ऑफ बीइंग सप्रेस्ड. पहले तो एक कम्युनिटी स्टार्ट करेगा, देन द अदर मेजॉरिटी वाला कम्युनिटी इन डोमिनेटिंग इन दैट डिस्टर्बेंस, and that is where the state's positive role comes. अब एक केस था इसमें, एक जावेद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. हरियाणा में एक पॉलिसी बनी थी दैट जितने भी लोग जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ऑल द कपल्स, दे विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पंचायत. वो पंचायत इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. देन व्हाट द प्रॉब्लम हेल्ड वाज दैट इन मुस्लिम्स there are 4 marriages possible. अब हर एक कोई तो करता नहीं है, बट वेरियस डू. सो यू गेट इनटू 4 मैरिजेस. अब हर शादी से एक बच्चा तो होगा, और एक तरफ आप रूल बना रहे हो 2 से ज़्यादा किसी के अगर बच्चे हैं तो वो पंचायत में भाग नहीं ले सकता. सो आर यू नॉट मेकिंग ए काइंड ऑफ टूल टू सप्रेस द मुस्लिम्स, बिकॉज नॉर्मली दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रंस. और सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं, हिंदूज में भी अगर आप जाओ एट द विलेज साइड, यू फाइंड मोर देन 2 चिल्ड्रंस दे आर हैविंग इन द रूरल एरियाज. सिटीज में भी हैं नॉर्मली एट दैट टाइम. लेकिन द चैलेंज वाज दैट के हमको तो इस्लाम में 4 निकाह करने की परमिशन है, और 4 निकाह करने का राइट है, तो 4 बच्चे भी हो गए हमारे. सो यू आर आउटराइटली वायलेटिंग आवर राइट. And it was also contended that in Islam it is required to get into 4 marriages. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इस्लाम में it is permitted to get into 4 marriages. It is not mandatory to get into 4 marriages. और 4 marriages का भी कंडीशन है, if you get treated your wife equally, not only material equity, mental equality also, the feeling and affection, the sexual equality also, then only you can get into more than 1 marriage. So 4 marriages are only permitted into Islam and they are not mandatory. तो कोर्ट ने तो एक तो ये बोला, दूसरा ये कहा कि कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर किसी लार्जर गोल के लिए लागू किए जाते हैं. लार्जर गोल है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल, और ये जो पंचायत में हमने लॉ लगाया है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगाया है हमने, जो कि लॉन्गर रन में हरियाणा में पॉपुलेशन कंट्रोल पर हेल्प करेगा. सो सच लॉज आर वैलिड. सो उस समय जो ये लॉ था, द कोर्ट हेल्ड दैट लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल. आई थिंक लेटर ऑन दिस लॉ वाज विथड्रॉन, बट एट दैट टाइम इट वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल. And when you see the points of S.R. Bomai, this is 29th paragraph. So इधर इस केस में बता रखा है, the characteristic of secularism, religious tolerance with mutual respect to all religions, mutual respect with religious tolerance to all religion. What does it mean? So what does it all means? Tolerance means I will bear, I will tolerate. So we have discussed the religious tolerance is having slight negative image. सिर्फ religious tolerance से काम नहीं चलेगा. So we have to think religious tolerance से भी एक step ज़्यादा. We religious tolerant with mutual respect. So if you go through 304th paragraph, both the expression socialist and secular
by themselves are not capable of precise definitions. We are, however, not concerned with their general meaning or content. Our object is to ascertain the meaning and expression secular in the context of our constitution. Similarly, you also find this paragraph: religion must be restricted to spheres designated appertaining to religion, manner that we may also, as early possible, a strong consolidation nation. Our first problem and the most important problem is to produce national unity in this country. So you will find so many points in this case. We are talking about टॉलरेंस से काम नहीं चलेगा, उससे भी एक स्टेप ज़्यादा वी हैव टू वन मोर स्टेप अहेड वी हैव टू थिंक. That is what secularism of India talking about. So that is the uh, feeling of respect to towards other religion. That is the ultimate meaning of the secularism. And for that, the states take positive steps to for all individuals, irrespective of their religion. मीन्स स्टेट धर्म के आधार पर किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम ऐसा नहीं करेगी. देयर should be equal benefits to all. The state takes a proactive role, taking the positive steps for the promotion of fraternity and tolerance. Fraternity is that feeling of oneness. Then state will not interfere in the pure religious matter. Rather, state can control purely secular activities associated with religion. Secularism is not anti-religious or anti-God. It does not mean you stop in believing God or you stop believing in religion. Secularism is a way of life. You believe in your God, you believe in your religion, but let the others be allowed to peacefully believe in their God and their religion. And you do not start disrespecting them because they are believing in a different God. So, secularism is not anti-religious or anti-God. Rather, it is a complete personal freedom to all individuals. Secularism is essential for effective and successful functioning of a democratic form of government. All people are equally free to follow their respective gods. So these are the various aspects of secularism in India. Now let's see some examples. 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो हुआ था, was it not anti-secular? Some of persons think that it is good and some of is against it, that it is not good. Because SR बुमई केस उसी पर है, उसी पर प्रेसिडेंट रूल आया था राजस्थान में, एमपी में, और यूपी राजस्थान एमपी के इनके प्रेसिडेंट रूल को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था, बेसिकली यूपी. सो इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड दैट दिस इज एंटी सेक्युलर. अब इन दिस दे आर द डिस्प्यूट था राम जन्मभूमि और मस्जिद को लेकर. सो एक्चुअल में ये लैंड डिस्प्यूट था, but not going on that merits. We are talking about whether there is religious structure was there already or not. So there is a religious structure already existing there, and that belongs to a particular community, and they are having faith in that, and they worship there. And at some distance, there is a small structure of Ram Janambhoomi, and at that also the people are worshipping. So वो मैटर था कि डिस्प्यूट था, दैट वुड बी रिजॉल्व बाय द कोर्ट. तो उसके लिए वेट करना चाहिए था, आपने डिमोलिश क्यों किया? एंड ऑन द फेस ऑफ द एंटायर मीडिया यू गैदर्ड द पीपल एंड यू डिमोलिश. यू मीन्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व. सो पीपल ने वॉट एवर द पब्लिक डू दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वॉट इज द रोल ऑफ द स्टेट देयर? उधर स्टेट मशीनरी ने क्या किया? दिस इज द मेन पॉइंट टू डिस्कस. Is it not the utter failure of the constitutional machinery that the entire state machinery is standing? The paramilitary forces are there. The CM also waiting and watching, but no one ever dare to ask them to take strict action to prevent that breaking from happening. और लोग इतने प्रोटेक्टेड एरिया में कैसे इतने हथौड़े वगैरह औजार लेकर कैसे पहुंच गए?
और इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को डेमोलिश कर दिया. सो there is, it shows that the failure of the machinery of the state means there is passive or active support of state. So there is some involvement of the part of the state. So you allowed that to happen. अब इस इंसिडेंट से दूसरे धर्म में भी एक्सप्लॉइट करने वाले लोग होंगे. हर धर्म में होते हैं एक्सप्लॉइट करने वाले लोग. सो दे मेक द एजेंडा ऑफ द दिस धर्म और दोनों रिलीजन्स को रेडिकलाइज कर दिया. एंड दैट विल रिजल्ट्स इनटू मोर कम्युनल राइट्स. So two major populations in India, one is highest and second is in another highest. The communal harmony is disturbed between them. So state की एक छोटी गलती से that state has not taken the proactive role. We are discussing here about the proactive role of the state. Whatever the Supreme Court decided कि it is Ram Janambhoomi, that land belongs to the Ram Janambhoomi, that is a different thing. But we are here discussing about the proactive role of the state at that time, जिसकी वजह से that affects the secularism among the peoples. So in the minority community में they are having the feeling that कि religious Indian constitution होते हुए भी आपने एक religious institution तोड़ दिया. तो उस तरह की फीलिंग आई है. तो एक सिचुएशन अब ये क्रिएट हुई है. तो इन फ्यूचर अब दिस इज द कंडीशन वेयर द हिंदूज डेमोलिश ऑन बिहाफ ऑफ हिंदूज. वी कैन नॉट से दैट दे आर हिंदूज और ऑल दैट. किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं बिकॉज देयर इज नो रिलीजन ऑफ एंटी सोशल पीपल. सो वॉट एवर. बट जो मुस्लिम्स हैं उनके माइंड्स में ये आया कि दैट हिंदूज डेमोलिश. सो उसी तरीके से किसी अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम डेमोलिश करते हैं किसी हिंदू आर्किटेक्चर को, देन इन दैट एरिया ऑल्सो द फेलियर ऑफ द स्टेट मशीनरी एंड दैट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल. अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है एदर नाउ और इन फ्यूचर ऑल्सो. जब if we are not having the faith of secularism or we are not believe in the Indian constitution, we are not having that. So it is necessary whatever the situation may be कि कितनी भी strong हमारी state machinery है, mechanism है, कितनी भी armed forces हो जाए, equipped हो जाए, but main thing I want to understand you is जब तक हर व्यक्ति के अंदर में secularism दूसरे धर्म के प्रति रेस्पेक्ट नहीं आएगा तो ऐसी सिचुएशन फ्यूचर ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड वेदर इन डिफरेंट रिलीजन. अब ये तो हुआ था अयोध्या में. दैट कुड बी डन इन अनदर एरिया वेयर द मुस्लिम्स आर मोर. सो इट कुड बी एनीवेयर. सो अगर तोड़ना भी था तो दैट कुड बी डन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट. अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया होता. अब राम जन्मभूमि का ऑर्डर पास हुआ है कि दैट इट बिलोंग्स टू राम जन्मभूमि, देन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट अब टूटता देन इट इज जस्टिफाइबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि देयर आर सेवरल ऑन द सेवरल रिलीजियस मूवमेंट्स अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन मंदिर हुए या मस्जिद हुए, उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या हाई कोर्ट के ऑर्डर पर काफी बार तोड़ा गया है कई डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट प्लेसेस पर. बट कोई वायलेशन कम्युनल राइट्स नहीं हुए. दैट इज बिकॉज दैट इज जस्टिफाइबल. सो इट अफेक्ट्स द फीलिंग ऑफ वननेस. इट क्रिएट द इनसिक्योरिटी. इट क्रिएट ए फीलिंग इन द minority people that the majority community has the guts to do on the face of everything. तो मेजॉरिटी कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि दैट ऑल ओवर इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी है तो देन हिंदू इज मेजॉरिटी. वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी इन पर्टिकुलर एरिया. अब किसी एरिया में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी हो सकती है, हिंदू की माइनॉरिटी होगी, देन ऑन अगर उधर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है देन इट विल अफेक्ट द सेक्युलरिज्म. सिमिलरली लेट्स टेक द 84 राइट्स ऑफ इंदिरा गांधी जो गोली मारी गई थी. Someone killed the shot the Indira Gandhi. Someone means you know who killed. अब किसी एक व्यक्ति ने अपने पर्सनल कारण की वजह से शॉट द इंदिरा गांधी बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ब्लू स्टार. अब ऑपरेशन ब्लू स्टार किसी सिख को पसंद नहीं था, इनफैक्ट किसी सिख या किसी हिंदू को भी पसंद नहीं था. सो वी आर नॉट गोइंग टू द एंटायर स्टोरी.
बट वॉट एवर द रीजन्स में भी किसी एक व्यक्ति ने किसी पर्सनल रीजन की वजह से शॉट डेड द इंदिरा गांधी, बट इट हैपेंड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कम्युनिटी वॉज इन्वॉल्व और पूरी कम्युनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड देयर वॉज रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ देम एंड द गवर्नेंस इज इन देयर हैंड्स, इवन इफ द इंदिरा गांधी वॉज डेड, दे आर हैविंग द कंट्रोल। तो उसके बाद जो राइट्स हुए थे, दैट इज अ ब्लैक पैच ऑन इंडियन हिस्ट्री। अब कोई इंसिडेंट ऑल ऑफ सडन हो जाता है तो वो तो अनकंट्रोलेबल होता है, बट जो लॉन्गर टर्म के लिए राइट्स चलते हैं दैट कुड बी कंट्रोल्ड। सो द इंसिडेंट इज नॉट ऑफ वन डे, इट कीप गोइंग ऑन सेवरल डेज। तो एक दिन हुआ, एक तुरंत कुछ घंटे के लिए हुआ, दैट कुड बी जस्टिफाइबल, बट लॉन्ग डेज के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, देन इट इज नॉट जस्टिफाइबल। टॉर्चर करना, रेप, लूटिंग, जलाना, तो ऑल दिस क्रिएट द फियर in the minds of the minority, and that is Sikh in India, that they are not secure, and they ultimately fails due to the failure of the state machinery. The concept of secularism is become weaken in their minds because they lost their faith into the constitution, कि constitution के होते हुए भी इतना सब कुछ हमारे साथ कैसे हुआ। सो काफ़ी दिन तक ये इंसिडेंट चला था, और लास्ट में जब अपने आप चीज़ें रुक गई, राइट्स रुक गए, तो गवर्नमेंट टेक द क्रेडिट दैट वी हैव अचीव टू डू स्टॉप ऑल दिस, बट व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द क्रेडिट ऑफ मिस फेलियर ऑफ दैट, कि इतने दिनों तक चला कैसे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव रूल ऑफ द गवर्नमेंट। सो अगर जहाँ पे भी गवर्नमेंट का पैसिव रूल होगा, then it would become a patches on the Indian history, because government is the trustee of the Indian constitution. Similarly, we talks about the Godra Kand, वो भी काफी लंबे समय तक चला। So whatever the incident, एक sudden heat of movement में कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए हो जाए, that is different thing, that would not be the patch, but ये काफी दिनों तक चले, that it totally reflect that it is the failure of the machinery of state, and that then it will affect the people and their mindset in a longer run. So the point is, when you remain the passive and you hold all the command, you means state, so in ऐसे सिचुएशन में नुकसान तो होगा, लेकिन आपका पैसिव रहना अपने आप में एक एंटी सेक्युलर एक्ट है, एंड विच इज नॉट परमिसिबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द पर्सन हु होल्ड्स दैट अथॉरिटी, he cannot afford to allow to in any circumstance which violates the constitution, be him X, Y or Z. So that is what held by the Supreme Court. Now write down on the topic what is difference between freedom of religion and secularism. So write down, freedom of religion is a matter of one's personal faith, and it does not affect the others directly. The individual follows its own religious belief and practices. The individual follows its own religious belief and practices the rituals accordingly. On the other hand, secularism does not remain confined to an individual. Rather, it is one's feeling towards other religion, and therefore it has to be expressed in one's outward behavior towards the others. Such behavior affects the societal peace and stability. If the person has anti-secular feelings, secularism therefore is more vulnerable and needs to be regulated and promoted by the state. So that is the difference between the freedom of religion and secularism. And why secularism is more vulnerable? Because मेरा एंटी सेकुलर बिहेवियर आपके साथ, मेरा एंटी सेकुलर फीलिंग, अगर मेरी एंटी सेकुलर फीलिंग है
तो आपके साथ मिसबिहेव करवाएगा, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू इनस्टेबिलिटी इनटू द सोसाइटी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज माय पर्सनल फेथ, एंड ये आपसे मेरा कोई टकराव उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं एंटी सेक्युलर हूँ तो मेरा बिहेवियर आपके साथ टकराव उत्पन्न कर सकता है, एंड देयरफॉर द सेक्युलरिज्म इज नीड टू बी more harnessed and to be promoted. So that's it for this lecture, and we will continue into the next lecture. Thank you for watching.